Good morning, students. Today we'll start the first chapter of history, that is looking back in the past. So, first we'll come to know in this chapter history. What is history? So, history is derived from the Greek word historia, which means research or study of past events. Historia जिसका मतलब है पिछली घटनाओं का अध्ययन. History consists of events that took place in the past, like the growth of humans. History इतिहास अतीत में हुई घटनाओं से मिलकर बनता है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस, द फार्मिंग एंड द चेंज इन द सिविलाइजेशन. चेंज इन द सिविलाइजेशन सभ्यता में बदलाव. द पास्ट कैन बी स्टडीड बाय द टूल्स और सोर्सेज. इतिहास को हम कई सारे सोर्सेज से स्रोतों से पढ़ सकते हैं, जैसे कि ओल्ड बुक्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर एंड so on. Inscriptions are some written records like शिलालेख. Now, according to the time, the overall human journey on the earth is divided into three unequal parts. The whole human journey we have divided in three unequal parts, and the first one is prehistory, the second one is proto-history, the third one is history. So first we will come to know about prehistory. What is prehistory? Prehistory is the time period the So prehistory was a time period before humans started recording events. This time humans were not civilized. As people were not civilized, they did not know how to read and write, and they do not record any specific event. वो किसी भी घटना को दर्ज नहीं करते थे. प्री हिस्ट्री वॉज द टाइम पीरियड जब वो किसी भी घटना को दर्ज नहीं करते थे. टिल दिस टाइम पीपल वर नॉट सिविलाइज्ड. We don't have any written record of this period. So this is prehistory. Now the next one is proto-history. Proto-history, it is the time period between prehistory and history. So writing was already invented in this period but not widely spread. राइटिंग इन्वेंशन हो गया था राइटिंग का, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे इसका विस्तार नहीं हुआ था. सो देयर वर लेस और राइटिंग्स एंड मोर मॉन्यूमेंट्स. तो हमारे पास इसके रिटन रिकॉर्ड्स कम हैं, राइटिंग्स कम हैं. मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, पोट्री एंड ड्राइंग्स एट्सेट्रा, सम ऑफ विच कैन बी सीन इन म्यूजियम्स, जिसको आज हम म्यूजियम्स में भी देख सकते हैं, वो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिससे हम प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, इस समय के बारे में जान सकते हैं. Now the third one is history. The time after the invention of reading, writing was adopted by most of the world till now falls under the period of human history. So the time after the invention of reading and writing, इस समय तक इंसानों को रीडिंग और राइटिंग दोनों आ गई थी. दुनिया में लोगों ने पढ़ना और लिखना सीख लिया था. दे हैड नो पेपर शीट्स एंड पेन्स टू राइट. लेकिन उनके पास कोई भी पेपर शीट नहीं थी, पेन नहीं था. सो यूजुअली व्हाट दे यूज्ड टू डू, इफ़ दे वांट टू राइट समथिंग, दे यूजुअली कार्व्ड ऑन स्टोन. वो पत्थरों पे नक्काशी करते थे, लाइक पिलर, वॉल और अ बिग स्टोन, टू record any event, to write down something, whatever they want. And after that invention of paper takes place, a plant named papyrus was a plant that was turned into paper for the first time in Babylonians, by the Babylonians and Egyptians after them, who made it very even better to use. Now the next topic is, why do people study history? Why do people study history? लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं? So children's, history is like a mystery box in which many hidden secrets are there. So if we want to uncover this mystery box,
we need to study the past. When we study the past, we can compare the present lifestyle. Just like what we are doing now, what technologies we have today, and what was there in the past, we can compare both the things. इन दोनों चीज़ को कंपेयर करने के लिए पास्ट में हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल थीं, क्या चीज़ें नहीं थीं, उनसे आज की लाइफस्टाइल को कंपेयर करने के लिए हम इतिहास को पढ़ते हैं. So, like in earlier times when people did items like jewelry, pots, food, etc. were buried with the body as people thought that life exists after death. We study history as it provides us with an opportunity to understand the evolution of humans and their societies and cultures. हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उससे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है ये समझने का कि ह्यूमंस में एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सोसाइटीज़ डेवलप हुई, हमारी संस्कृति में, कल्चर में कैसे डेवलपमेंट हुआ. These days we all use rubber tires. Nowadays we are using rubber tires. It was originated from the early stone wheel. Most of the modern word inventions are based on the discoveries made in the past. No, not just the things, but ideas, beliefs, and influences have been made by the early humans that can be seen even today. So, most of the modern inventions are based on the discoveries made in past. मॉडर्न में हमने जितने भी इन्वेंशन किए हैं प्रेजेंट टाइम में, वो सारे हमने अपने पास्ट के डिस्कवर खोज से ही इन्वेंशंस किए हैं. नॉट जस्ट थिंग्स, ना सिर्फ चीज़ों को, बल्कि हमारी आस्थाएं, हमारे बिलीव्स, विश्वास एंड इन्फ्लुएंसेस, धारणाएं, ये सारी चीज़ें हमारे पास्ट से ही हमने सीखी हैं या डेवलप की हैं. नाउ विल कम टू नो दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन हिस्ट्री. How geography plays an important role in history. So, geography has played a vital role in India's history. India is protected by the Himalayas in the north. जैसा कि हमें पता है, नॉर्दर्न रीजन में, उत्तर की दिशा में हिमालयाज से इंडिया को प्रोटेक्शन मिलता है. अरेबियन सी इन द ईस्ट से अरेबियन सी से प्रोटेक्शन मिलता है. इंडियन ओशियन इन द साउथ एंड बे ऑफ बंगाल इन द वेस्ट. इंडिया हैज़ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, जस्ट लाइक वी हैव माउंटेन्स, वी हैव रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वास्ट फॉरेस्ट्स. After fascinating landscapes, we also have wonderful deserts, refreshing shores, beautiful hills, and waterfalls, forest, and rich and rare wildlife. So we have different types of plant species, we have different types of animal species. There are several numbers of river system in India as well. So the name is derived from the name of Indus. The name India is also derived from the name of a river named Indus. So as we know that the Indus Valley civilization जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये सभ्यता दुनिया की सबसे पहली सभ्यता जो कि कहाँ पे फ्लरिश हुई, इंदुस रिवर के पास. The Indus River flows in northwest part of India and the Sanskrit name of Indus is Sindhu. So this is also called Sindhu Ghati Sabhyata. India is a land of rivers. As we know, in India we have many rivers. People of India started living near rivers like Ganga and cities developed on the banks of Ganga. Why people used to live near rivers? Because of the availability of water, because of the fertile land, because of the the area in the south of the river Ganga was known as Magad and it was ruled by many powerful rulers. The area which was near south
रिवर गंगा वॉज नोन एज मगध, उसको हम मगध के नाम से जानते हैं. इट वॉज रूल्ड बाय मैनी पावरफुल रूलर्स, और उसमें बहुत सारे शक्तिशाली राजाओं ने रूल किया. द रूलर्स हैड बिग किंगडम्स एंड आर्मीज. तो यहाँ पे रूलर्स के बड़े बड़े राज्य थे और बड़ी सेनाएं थी. मोस्ट ऑफ द men marched in the armies. Some of them were traders and transported goods from one place to another. Other people were sculptors, potters, craftsmen, builders, tailors, fishermen, farmers, ironsmith, etc. So, geography also determines the population and development seen in a particular area. Geography हमें किसी पर्टिकुलर जगह की जनसंख्या, वहाँ पे हुए विकास के बारे में भी बताती है. द एरिया विच लैक फेवरेबल कंडीशन required for a good living. So, if we want to live in a particular area, there should be favorable conditions, like there should be availability of water, food and all. So, we'll finish this topic till here today. Thank you.